Hi all, I'm Ritika Chaurasia and welcome to my YouTube channel. So I'm going to start a new video series for beginners. So it will be like some terminologies used in cybersecurity and that are not easy to understand. So I'm trying to make short videos on that. Hope you like that. So we are starting with what is vulnerability. It is a weakness in a system that can be exploited by threats. So what can be a weakness in a system? Weakness can be like there is no password in a system, and or maybe if it has a password but that is easy to crack, like 12345, or something very easy to guess like 0008 times. The vulnerability can be anywhere in your system, in your hardware, in your network, like it can be anywhere overall in your infrastructure. Okay, so what's the goal of cybersecurity is that like we need to protect our systems from the threats who can exploit these weaknesses, and uh, that could create a risk for our systems. So we'll understand what is exactly threat is. Okay, so threat is like someone, it can be some other person, some third party, or some company, or even some other countries as well, can be our employees as well. So what they do, they see a weakness in our system and they try to exploit it, they try to misuse it for their own cause, for their own, it can be like for money or something important for them, or it can be just for fun. So we'll move on to some few points that are considered for vulnerability. That is, it can be set as a security flaw in your system, and as I said, it can be in your software, hardware, or it can be in a human behavior as well, right? So we can overall say that it's like a crack in a system that that allows another person or third party to come and exploit that particular weakness, and that could really cause a risk to our system. So I'll just quickly explain all of it in Hindi as well so that it will be easy to understand for everybody. So vulnerability क्या है? Vulnerability एक weakness है आपके सिस्टम में जिसका कोई भी मिसयूज करके कुछ भी कर सकता है। मतलब जैसे कि वो आपका डेटा मिसयूज कर सकते हैं और आपका अ, सारा डेटा लेकर किसी को बेच सकते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा ब्लैक मार्केट में, ये सब डार्क वेब में ये सब होता है कि क्रेडिट कार्ड्स जो बड़े बड़े ब्रीचेस होते हैं उसमें क्रेडिट कार्ड्स इन्फो जो होता है वो फिर डार्क वेब में जाके बिकता है। सो इट इज़ रियली टेरिफाइंग, और हमें पता भी नहीं चलता है कि ये सब कब हो रहा है। एक रियल एग्जांपल से समझते हैं कि एग्जैक्टली exactly क्या होती है वल्नरेबिलिटी। जैसे समझ लो कि एक घर है ये, जिसमें ज़्यादा कोई नहीं आता है क्योंकि शायद सब लोग बाहर चले गए कहीं कुछ काम करने, या फिर जॉब लग गई सबकी बाहर। तो इसमें कोई नहीं आता जाता, बट लाइक फेस्टिवल्स पर आते हैं लोग यहाँ पे, और फ्रीक्वेंटली नहीं आते, वेरी रेयरली दे कम। तो ये चोर है एक, तो दिस इज थ्रेट। ये थ्रेट है इस घर के लिए, जिसको पता है कि इसमें कुछ वैल्यूएबल थिंग्स हो सकती हैं जो उसके काम की हैं। और ये खाली घर जो है ये हमारा एक वल्नरेबिलिटी है, क्योंकि ये खाली है इसलिए वल्नरेबिलिटी है, और हो सकता है कि इसके लॉक्स भी खराब हो गए हों, और क्योंकि काफी टाइम पुराने होंगे ऑब्वियसली। सो ये वल्नरेबिलिटी हो गई हमारा एम्प्टी हाउस, एंड चोर इज थ्रेट। ठीक है, तो अगर ये चोर इस वल्नरेबिलिटी को, यानी कि ये अनअटेंडेड है, इसको एक्सप्लॉइट करता है, यानी कि अगर ये जाके चोरी करता है इस घर में, तो वो हमारे लिए, जिसका घर है, घर के ओनर के लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि क्योंकि ऑब्वियसली उनके वैल्यूबल थिंग्स रखे हैं उसमें। ओके, सो आई थिंक मैंने बहुत
नॉर्मली समझाया है, so you will understand. And let me know if you like this video. Thanks a lot for watching.